नमस्कार, स्वागत है आपका पीएच फिजिक्स इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। पीजीटी फिजिक्स सिलेबस मेनली 11th एंड 12th पे बेस होगा। कुछ टॉपिक बीएससी से रहेंगे। तो पहले बात करते हैं हम 11th क्लास के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट यूनिट रहेगा इसमें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसमें नीड्स फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, dimension of physical quantities, dimensional analysis and its applications। सेकेंड यूनिट रहेगा काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। देन एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, uniform accelerated motion, velocity time and position time graphs, relation for uniformly accelerated motion, graphical treatment पढ़ेंगे। इसके बाद है motion in a plane, scalar and vector quantities, position and displacement vectors, general vectors notations and equality of vectors, multiplication of vector by real number, addition and subtraction of vectors, relative velocity, unit vectors, resolution of vector in plane, rectangular components, scalar and vector product of vectors, motion in a plane, cases of uniform velocity and uniform acceleration, special case रहेंगे इसमें projectile motion, uniform circular motion। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, momentum and Newton's second law of motion, impulse, Newton's third law of motion, law of conservation of linear momentum and its applications, equilibrium of concurrent forces, static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, then lubrication, dynamics of uniform circular motion, centripetal force, example of circular motion, vehicle on level circular road, vehicle on bank road। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशंस। इसके बाद पढ़ेंगे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद सम एग्जांपल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, rigid body rotation and equation of rotational motion, then comparison of linear and rotational motions, moment of inertia, radius of gyration, value of moment of inertia for simple geometric object, no derivation, statement of parallel and perpendicular axis theorem and their applications। gravitation में हम पढ़ेंगे Kepler's law of planetary motion, universal law of gravitation, acceleration due to gravity and its variation with altitude and depth, gravitational potential energy, gravitational potential, escape velocity, orbital velocity of satellites, geostationary satellites। Then next unit is properties of bulk matter, mechanical properties of solids, elastic behavior, stress strain relationship, Hooke's law, Young's modulus, bulk modulus, shear modulus of rigidity, Poisson's ratio, elastic energy। इसके बाद है mechanical properties of fluids, pressure due to fluid column, Pascal laws and applications, hydraulic lift,
हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इसके बाद है विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर है सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन आइडियल्स टू ड्रॉप्स, बबल्स एंड कैपिलरी राइज। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, anomalous एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सीपी, सीवी, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, इसमें लेटेंट हीट ट्रांसफर, कंडक्शन एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीवंस लॉ। फिर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग ए गैस। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ एंड एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट यूनिट है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस में पीरियोडिक मोशन, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शंस। देन सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड इक्वेशन, phase, oscillation of a spring, restoring force and force constant, energy in simple harmonic motion, kinetic and potential energies, simple pendulum, derivation of expression for time period, for free, forced and damped oscillations, qualitative ideas only. Then resonance. Waves के अंदर waves motion, longitudinal and transverse waves, speed of wave motion, displacement relation for a progressive wave, principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves for in string and organ pipes, fundamental mode and harmonics, then beats and Doppler effect। 12th का सिलेबस, 12th में फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Then electric field due to point charge, electric field lines, electric dipole, electric field due to a dipole, torque on a dipole in a uniform electric field. Then electric flux, statement of Gauss theorem and its application to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet, uniformly charged thin spherical cell, field inside and outside and different cases। उसके बाद electrostatic potential and capacitance, electrostatic potential difference, electric potential due to a point charge, a dipole and a system of charges, then equipotential surfaces, electric potential energy of a system of 2 point charges and electric dipoles in electrostatic field, conductors and insulator, free charges and bound charges inside a conductor, dielectrics and electric polarization, capacitors and capacitance, combination of capacitors in series and parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor, Van de Graaff generator। Then next unit is current electricity। Current electricity में electric current, flow of electric charge in a metallic conductor, drift velocity and mobility and their relation with electric current, Ohm's law, electric resistance, VI characteristics, linear and non-linear, electric energy and power, electrical resistivity and conductivity, then carbon resistor, color code for carbon resistor, series and parallel combination of resistors, temperature dependence of resistance, then internal resistance of a cell, potential difference and EMF of a cell, combination of cell in series and in parallel, Kirchhoff's law and in simple applications, Wheatstone bridge, meter bridge, potentiometer principle and application to measure potential difference and for comparing EMF of two cells, measurement of internal resistance of a cell।
Then next unit is magnetic effect of current and magnetism, moving charges and magnetism, concept of magnetic field, Oersted experiment, Biot-Savart law and its application to current carrying circular loop, Ampere's law and its application to infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoids, force on a moving charge in a uniform magnetic and electric field, cyclotron, force on a current carrying conductor in uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductors, definition of ampere, torque experienced by a current loop in a magnetic field, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter, magnetism and matter, current loop as magnetic dipole and its magnetic dipole moment, magnetic dipole moment of a revolving electron, magnetic field intensity due to magnetic dipole or bar magnet along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field, bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines, Earth's magnetic field and magnetic elements, para, di and ferromagnetic substances with examples, electromagnets and factors affecting their strengths, permanent magnets, electromagnetic induction and alternating currents, electromagnetic induction, Faraday's laws, induced EMF and current, Lenz's law, eddy currents, self and mutual inductance, then alternating currents, peak and RMS value of alternating current or voltage, reactance and impedance, LC oscillations, qualitative treatment, LCR series circuit, resonance, power in a AC circuits, wattless current, AC generator and transformer. Then next unit is electromagnetic waves. In electromagnetic waves, need for displacement current, electromagnetic waves and their characteristics, qualitative ideas only, transform nature of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum, radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays, gamma rays, including elementary facts about their uses. Then next unit is optics. In optics, ray optics and optical instruments, reflection of light, spherical mirrors, mirror formula, then refraction of light, total internal refraction and its application, optical fibers, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lens maker's formula, magnification, power of a lens, combination of thin lenses in contact, combination of a lens and a mirror, refraction and dispersion of light through a prism, scattering of light, blue color of the sky and reddish appearance of the sun at sunrise and sunset, optical instruments, human eye, image formation and accommodation, correction of eye defects, myopia, hypermetropia using lenses. Then microscopes and astronomical telescopes, reflecting and refracting and their magnifying powers. Then wave optics. In wave optics, wavefront and Huygens principle, reflection and refraction of a plane wave at plane surface using wavefronts, proof of law of reflection and refraction using Huygens principles, interference, Young's double hole experiment and expression for fringe width, coherent sources and sustained interference of light, diffraction due to single slit, width of central maxima, resolving power of microscope and astronomical telescopes, polarization, plane polarized light, Bristol laws, use of plane polarized light and polarides. Next unit is dual nature of matter and radiation, dual nature of radiation and matter, dual nature of radiation, photoelectric effect, Hertz and Leonard's observation, Einstein photoelectric equation, particle nature of light, experimental study of photoelectric effect, then matter waves, wave nature of particles, de Broglie relation, Davison and German experiment, experimental details should be omitted, only conclusions should be explained. Then next unit is atoms and nuclei. In atoms, alpha particle scattering experiment, Rutherford's model of atom, Bohr's model, energy levels, hydrogen spectrum. In nuclei, composition and size of nucleus, atomic masses, isotopes, isobars, isotones, then radioactivity, alpha, beta and gamma particles or rays and their properties, radioactive decay laws, mass energy relation, mass defect, binding energy per nucleon and its variation with mass number and nuclear fission and fusion. Then next unit is electronic devices. In electronic devices, semiconductor electronics, materials,
devices and simple circuits, energy bands in solids, qualitative ideas, conductors, insulators and semiconductors, semiconductor diode, IV characteristics in forward and reverse bias, diode as a rectifier, special purpose PN junction diodes like LED, photodiode, solar cell, Zener diode and their characteristics, Zener diode as a voltage regulator, then junction transistor, transistor action, characteristic of transistor, transistor as an amplifier, common emitter configuration and oscillator, then logic gates, OR, AND, NOT, NAND and NOR, transistor as a switch. Next unit is communication system and elements of communication system, block diagram only, bandwidth of signals, speech, TV and digital data, bandwidth of transmission medium, propagation of electromagnetic waves in atmosphere, sky and space wave propagation, need for modulation, production and detection of an amplitude modulated wave. इसकी PDF आपको phphysics.com पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।